I'm in the Farrukhabad village in the Bakshika Talab area of Lucknow, the capital city of Uttar Pradesh. And right behind me, there are 3 stray dogs who are biting away the flesh of a freshly dead cow, piece by piece. Locals allege that the cow has been freshly dumped here and that it is a routine affair. About just 200 meters from this spot, there is a state-run Gaushala with about 100 cows at present. Locals say that cows who die at the Gaushala are being brought here and dumped by some workers. The sight of dead cows is not a new one. Rather, it's a routine affair, say locals of Farrukhabad village, situated around 20 kilometers from Lucknow city, the capital of Uttar Pradesh. The plot is full of cattle carcasses, and the scene lays bare the BJP government's tall promises about management of stray cattle in the state. Locals allege that dead cattle from this village and some others nearby are being brought here and dumped without any medication. However, 2 videos which have recently gone viral have caused an outrage among locals. One of the videos shows a daily wager who picks up the cattle carcasses from across the village and the state-run Gaushala, carting a cow carcass from the Gaushala to this plot, which is just about 200 meters away from the Gaushala. The second video, purportedly shot inside the Gaushala, shows 2 men loading a dead cow onto the same cart. और यहाँ पे पास पड़ोस के गांव और गौशाला से गाय वाय जो ख़त्म हो जाती हैं वो आती हैं उठा के यहीं पे, और इनको चारा वारा नहीं सही मिल रहा है। जैसे कि अब गौशाला में चारा सही नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, टाइम से नहीं मिल रहा है, तो वो सब परेशानी के कारण मर जाती हैं, तो यहाँ फेंकी जाती हैं। रोज़ का ही काम है यहाँ पे? अब रोज़ क्या, यहाँ पे जगह खाली नहीं रहती है, जैसे जब तब आया ही करते हैं, सब जगह के जानवर यहीं आते हैं तो जगह खाली रहती है। यहाँ हमने देखा कि कुत्ते नोच के खा रहे थे गाय को। वो तो खाएंगे ही, जब खुला जानवर पड़ा है तो कुत्ते खाएंगे ही। कुत्ते खाते हैं और अदर जानवर खाते हैं, सब खाते हैं। अदर भी जानवर आते हैं? और जानवर क्या, सियार वार आते हैं जो और हैं वो भी खा लेते हैं। अच्छा, हाँ। ये कब से चल रहा है ये सब? काफी समय से चल रहा है, आप तो आज आई हैं मगर काफी समय से चल रहा है। We spoke to Ram Milan Yadav, former Gau Palak or cow rearer at the Gaushala. He alleges mismanagement on the part of those running the Gaushala and says that cows are being denied a proper diet and green fodder here. यहाँ दिक्कत ये हो रही, गौशाला की गैया सारी मर रही हैं। अच्छा। रोज 2-4 मरती हैं। वो यहाँ खाली मूली डाल दिया जाता है। कौन डालता है? ये डालते हैं जो सचिव यही सब हैं, इसी में के कर्मचारी जो हैं वही डालवा रहे हैं। वही डलवा रहे हैं। ठीक है, डलवाते हैं तो इतनी गंध यहाँ मची है कि लोगों को बैठना मुश्किल है यहाँ पे, और गांव तक बदबू जा रही है। लिहाजा ऐसा करें कि अगर ये जो बदलेंगे तभी ये काम रुकेगा, वरना रुकेगा नहीं। यहाँ पे क्या कुछ बन रहा है क्या? यहाँ मंदिर बनवाया जा रहा है। फरक्काबाद, सैदापुर, पलहरी, तीनों गांव के आदमी, तीनों गांव के लोग बनवा रहे हैं। तीनों गांव के आदमी मिलके चंदा दिया है, चंदा से मंदिर बन रहा है। गौशाला में लेबर है 2 लेबर केवल हैं, और जो ये नरेगा लगता है, नरेगा से जुड़ करके इन्होंने गोबर ओबर हटवाते हैं। वहाँ 3 लेबर नहीं है, 1 लेबर है केवल। 24 घंटे वाला 1 लेबर क्या करेगा वहाँ? The Farrukhabad village pradhan and the local administration officials confirm that the second video has indeed been shot inside the Gaushala, and the dead cow being carted to the plot was indeed one of the over 100 cows lodged inside the Gaushala. As the print entered the Gaushala premises, we found a 6-acre plot with a permeable fence in place of a boundary wall. For sheltering the 102 cows, there are only 2 tin sheds where cows could be seen huddled together. Villagers allege that the cows lodged inside the Gaushala tend to wander away due to the permeable fence and tend to eat grass from the fields. They are vulnerable since they are even exposed to poisonous grass. Workers also acknowledge this problem and add that the older cows, especially the bulls, tend to attack the younger ones, resulting in fights. Ram, the only cow rearer present in the Gaushala, and villagers told ThePrint that there is a need for a proper boundary wall around the Gaushala. गाय के रखने के लिए इसकी कोई बाउंड्री हो जाए, जो मसाड़ अलग कर दिए जाए, गैया अलग कर दी जाए। जी, गैया और सांड एक साथ रहने से क्या होता है? मार देते हैं, लड़ाई कर देते हैं। उस वजह से दिक्कत होता है। जी। अच्छा, तो चारा बोलते खन ऊपर मार कर दे। और भी कोई दिक्कत थी यहाँ पे? आप जैसे बता रहे थे कि इसके लिए प्रॉपर बाउंड्री भी होना चाहिए। जी। बाउंड्री से क्या किस चीज़ से बचा जा सकता है?
बाउंड्री से बचा जा सकता है, जो तार तड़क के बाहर निकल जाते हैं जानवर। ये जानवर निकल जाते हैं। वो दिन नहीं गड़वाई न ले चला गया है, अब तो यहाँ गाड़ी चालू कर दी। अब गड़ाई चालू कर दी है, पहले ले जा रहे थे। हाँ, अच्छा अच्छा, तो कौन लेके जाता था वहाँ पे? चमार। गांव के ही हैं वो? गाँव नहीं जी। पलारी के। तो अब वो बंद कर दिया गया है उसको वहाँ पे। और किस चीज़ की आवश्यकता है आपको गौशाला में? अरे भूसा रखने के लिए, गैया भूसा बिदगावत है के लिए जो है दिक्कत, और तो कोई दिक्कत है। अरे वो सही से बाउंड्री हो जाए, जाके भूसा उसके अंदर पुरे जाए, जो भूसा खराब हो तो वो न खराब हो। Siaram admitted that earlier burial of dead cows was not happening inside the Gaushala, but it has now started after the videos went viral. Officials took cognizance of the videos, and a team of local veterinary doctor and secretary visited the Gaushala. Lucknow's chief veterinary officer, Dr. D.K. Sharma, says that the staff managing the Gaushala may be indulging in mischief. Recently, 48 cattle were shifted from a now closed Gaushala at Lucknow's IIM road to the one at Farrukhabad village, resulting in the latter getting overcrowded. Crowding at UP's Gaushalas is a serious problem, and most of them face a shortage of funds to feed the huge number of stray cattle flowing into the Gaushalas. The UP government's crackdown on slaughterhouses has resulted in a break in the cattle trade economy, and items like the cow's skin are not being sold anymore, say locals. Cattle transporters are scared of transporting the dead cattle, officials confirmed, resulting in stray cattle ending up in Gaushalas. ले जाया करते थे तो पैसे नहीं लेते थे उठाने वाले लोग, जो है खाल वाल का इस्तेमाल हो जाता था तो पैसे नहीं लेते थे। अब जो खाल नहीं बिक रही है तो लोग पैसे लेते हैं उठाने के, तब उठाते हैं घर से जानवर को, यहीं डाल देते हैं। अच्छा, मतलब जो घरों पे जानवर मर जाते हैं उनको उठाने के पैसे लेते हैं? हाँ, लोग उठाने के पैसे लेते हैं और यहाँ आके डाल देते हैं? यहाँ आके डाल देते हैं। अच्छा, अभी भी ऐसा ही चल रहा है? अभी भाई ऐसा ही चल रहा है। तो खाल को अब निकालते नहीं है, पहले आप कुछ बता नहीं करते हैं, अब आके डाल देते हैं, बस चले जाते हैं। अच्छा, पहले खाल निकाल ली जाती थी, जो उनके काम का चीज था, खाल वगैरह वो सब ले जाते थे, जो काम का। अब नहीं बिक रही है? अब बिक रही होती तो ले जाते, अब बिक नहीं रही तभी तो ले नहीं जा रहे। But activists pointed out that the main reason for crowding of Gaushalas was the fact that those milking the cows were the ones abandoning them. Who is earning from these cattle and who is procreating them? That's the big question. So it's the animal husbandry department that is doing artificial insemination to grow the numbers of these cattle, and it is a dairy industry which is milking them to obtain more and more profits, and they are making huge amounts of profits as cooperatives, as livestock development boards, and they are burdening other departments such as the urban local bodies or the NGOs, which have nowhere to go but to the begging pool, to keep the discards or the byproduct of this industry and use it and to maintain very high standards also. It's a settled principle in law that the polluter must pay. Any byproduct of an industry has to be disposed of in a responsible manner by the commercial entity which is producing that byproduct. In the case of dairy, it's a living byproduct and it must be disposed of properly. In case of cattle, kept lifelong in a particular manner by the dairy industry itself. What are the cooperatives or the milk industry doing? Why have they not created any retirement centers for spent cows or for male cows? They basically abdicated their responsibility and lumped that burden on other departments and on non-government organizations, which they should have shouldered. Shyam Nandan Singh, chairman of the UP Gaur Seva Ayog or Cows Commission, told ThePrint that he has taken cognizance of the matter and admitted that the temporary Gaushalas across the districts are facing several problems and fund crunch. देखिए, आपकी ये जो समस्या है वो ज़िलों में अस्थायी जो गौशालाएं हैं वहाँ इस प्रकार की समस्याएं सामने आती होंगी, लेकिन ये डायरेक्टली हमारे क्षेत्र में नहीं है, कार्य क्षेत्र में। लेकिन फिर भी इनकी कोई समस्याएं हमारी जानकारी में आती हैं तो हम डीएम को बोलते हैं, स्थानीय सीबीओ को बोलते हैं और उनसे कहकर के बाद समस्या को पूरा कराने की कोशिश करते हैं। The UP government's Animal Husbandry Department has spent over rupees 1,369 crores in the previous financial year. Every year,
crores of rupees are being spent on the name of cow protection by the government. However, the visuals emerging from the capital city present a stark reality of the situation on ground. These are just glimpses of what may be happening across the state. Locals say that they voted for the BJP government, hoping that both Beti and Guy will be safe. They have some serious questions for the BJP government. If cow is unsafe under the Yogi Adityanath government, then when will it be safe? They ask. In Farrukhabad, this is Shikha Salaria for ThePrint. For more such videos, subscribe to our YouTube channel and follow our Twitter and Facebook pages.